হ্যাঁ। আমাকে জল দাও না প্লিজ। করে দিতে পারবে? করে দিতে পারবে? तो झापना खुली है बंद है? बोतल बता बोतल बता बोतल। Morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. This is our basic configuration of which we did it in the last class. We have this configuration from your side. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we will do it OSPF configuration in the same like the previous basic configuration which we have used it for the EIGRP and RIP.
So here I have not configured EIGRP in the previous class we have seen it. And I have saved before configuring EIGRP this configuration. So no need to even remove the EIGRP. We will go ahead with the direct disconnect. I'll just check it whether my same network devices are pinging or not, and I'll try to ping from the device to the router, and then we'll move ahead with the OSPF. So just you also have to verify that inside the network device should ping, and in the direct connected network also the device to the router default gateway and interface it should ping. That you have to test it first. So just test it, all of you from your end. Pinging. So check with that different device. Yeah. Hello. Fine. Yeah. Tell me. Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, audible. Yes, sir. Yeah, that's fine. Everything is fine. I mean, all the devices and the router interface are pinging. So now we will move ahead with the OSPF. You can check with the last router as well. Because sometimes we save that configuration, but in meanwhile, if we change something, so when you configure routing protocol, at that time we'll get in trouble. So before of that, you should just that. It will be better. Being 192.168 dot, let it be T.1. My default gateway. Yeah, that's fine. Spin it. Now we'll check it for ping 192. Sorry, I will check it serial interface 20.22.0.0.2. Yeah, that is also fine. It means that all the devices and the serial interface is communicating, I mean pinging, and along with that, directly connected networks are also pinging. So now we'll go ahead with the indirect connections. The indirect connection, we require that routing protocol. So last class we have seen EIGRP. Enhanced Interior Gateway Protocol. Now today we'll see Open Shortest Path First protocol. That is called as a OS. Sir, Yeah, tell me. till now did you just do the basic configuration? And Yes. I mean, okay, basic okay, okay. configuration, that was the previous class I have used. Like I have not done, just I have tested that whether my previous basic configuration is working fine or not. Okay, sir. Okay. Okay. So let's move ahead with the OSPF. Just open the router first. T.
If you want to check the directly connected network, so you know the command already to IP route. Then that 10.0.0 series is there, and class A and class E IP directly connected. That's fine. So I'll configure that OSPF. So I have to write the command router OSPF. And if you want to know what should be the next things in the OSPF, so just give the question mark. In the OSPF, we require the process ID, like how you're using in the EIGRP while autonomous number you are using it. So in OSPF, we required that process ID. So any value you can give. ID, the range is given. No? So 1 to 65,535. Out of this range, any value you can enter. Just write that router OS PF, and the process ID, let it be 10. Now the next thing is that you have to define the network. Here, whatever network you have defined, that will be like similar to the previous EIGRP concept, like directly connected network only you have to type, followed with the which mask, wildcard mask. Okay. And the new thing will be one area you need to define. So let me write the command so that you understand in a better way. Network, and then network ID, directly connected network ID. So I have to type this network. Just see here, 10.0.0.0. And the wildcard mask, can you tell me what should be the wildcard mask, guys? 0.255.255.255. Good. I'm done. Now the next thing is that what I have to give. So I don't know. So I'll give the question mark. Okay. So here they are saying that area set the OSPF area ID. Okay. So I have to give that one any area detail. So this router is for which area, in the sense of which locations I am going to configure. So let it be area. What value I'm going to give? Let me ask to them. So what they're saying? They're saying that the OSPF area ID as a decimal values. Okay, and there is some ABCD value they have given OSPF area ID in the IP address format. Okay, so what I will give, let's give area any ranges from 0 to something is given, na? Some values. So what I will give 0 here. Let it be. So this is my area 0, and this same area I'll use for the rest of the or router, so that they can communicate among themselves particular geographical regions. So just hit enter after this. Is there anything else I have to give? Just give question mark. No, nothing I have to enter after this. If CR is coming to that, you are clear. I mean, you don't have to write anything else. That is fine. Just hit enter. Afterwards, I'll go ahead with another network. So my directly another network is connected network is 192 series 192.168.1.0, and the wildcard mask should be 0.0.0.255. yes. Done. And area is same one, which means that. So the new thing here is only you have to define. I mean, two things. One is process ID, another is area. But in EIGRP, only you are giving a autonomous number after the route. So here, when you use the routing protocol OSPF, you have to define the process ID, and when you will enter the network detail in this in particular router,
So at that time, you have to also define that this network detail is for which area you are going to configure. So also you have to give the area race. So need is here like area as well as process ID. Remember this. Yeah. So I'm typing the network, but it's an incomplete command. Huh? Uh, Typing network incomplete command. Means I'm typing the net 10.0.0.0 that network, but it is showing incomplete command. So because you are not, maybe you are not typing your the wildcard mask detail. Wildcard mask is mandatory here. In the OSPF wildcard mask, you must have to type that. But in EIGRP you can skip. Typed it. Just type wildcard mask along with the area and then enter. It will work. Just see here how I have written that network, then the ID of the network, wildcard mask, and area. This all the things if you type, then only it will work. If you type this only network and you give the question mark, then it will go to the next step. I mean, it will give you some information like what you have to type next, like how I did it for the previous command. Just look here. I have typed network 10.0.0 wildcard mask, and I am giving question mark. I think you are by mistake you are just hitting enter after this. So if you hit enter, it will not work. Because few more things you have to type in the OSPF concept. So if you give question mark, then it will work. Tell me. Sir, what is the purpose of area that process ID? Yeah, I mean area is just like how you have defined that autonomous number. So here two things is defining that like when you're configuring like any kind of OSPF in particular router. So there is a some ID because see if you have hundred or thousands of router and if you'll define with the some ID like where you have configured OSPF and some router suppose some set of router where you're configuring EIGRP, somewhere you're configuring OSPF, right? It is not mandatory like everywhere you have to configure OSPF or everywhere you have to configure EIGRP. It depends upon that the vendor. I mean the service provider, maybe like suppose the Cisco or Juniper. So which type of in which areas or in which city they want that if they have the less number of devices and less number of different networks, so they can go ahead with some other protocol, maybe EIGR they can follow. So how do you define that? How do you get to know that like where you have configured OSPF, where you have gone with the autonomous number of EIGRP, and which area you are defining it, in which geographical region you are configuring this thing. So for that purpose, they have for the just for the identification of your network, or maybe you can say that for the identification of your locations where you have configured which type of routing protocols. So for that purpose, basically they have used that the concept that is called as the area. Like maybe sometime what happened, you'll see like you are going for the one project and this project is based on all over based on it's not only for the India geographical regions, it's for all over the world, right? So this three maybe you'll configure this three router for India location, maybe another three router you'll configure for the USA, maybe three router you'll configure for Australia. So on that basis you will when you will configure all those routers and you will connect the WAN protocol in between and you'll have a communication between all different geographical regions. So on that case, how do you identify if there will be some trouble, if there will be any failure in between, packet is not sending? So it will be identified very quickly through the routing protocol when if you have configured, definitely you have to configure the routing protocol. So where the fault is coming. So for that purpose, you can go ahead with the first geographical regions, that the area that you can identify, like okay, area zero where you have configured which location you have configured area 0. So you can directly even go to that area only. You need to check for entire globe, right? So you will check only the area 0 where suppose I have configured area 0 for India, area 1 I have configured for Australia, and area 2 I have configured for USA.
So on that basis, I'll first when I'll go for the troubleshooting, so I'll check with the area only, and accordingly when I got the area, then I have to go ahead with the ID. So ID will be two things like here either if you go up with the EIGRP, then you'll check with the autonomous number, and if you have configured that OSPF, then you have to go with the process ID. So on that basis, you can identify. So due to that, and apart from that, if you want to also know more and more about this, so I'll recommend you to refer to that our LMS like NetAcad LMS. They have defined it very nicely in their models. So on there you can refer. They have given some examples also about like where what is the use of process ID, then autonomous number, the area, everything they have defined in your LMS. So there also you should refer so that you go in more depth about that. Okay. Yeah, tell me. So, but the underlying concept of EIGRP and OSPF is same, right? Yeah, mostly that is things. Both are the routing protocol, na. So that's why the most of the things will be similar to that. Is even you'll compare with the RIP. In the RIP also we are giving the network details, right? I hope you remember. Except static Yes, sir. routing. Except static routing, in the RIP also we have given. RIP is the easiest. I mean the simplest. The command you have to type to configure that routing protocol. Like there is very less command is only network detail you have to give. Simple, you have to write the router RIP and give the network. But whenever we are coming up with the EIGRP and OSPF, few more lines of the command has been added, and that command is make you more clarity because the RIP is very confusing. When if you configure in all over the world RIP, and if there will be any trouble in the network, so it's very difficult to identify where you have to check. Otherwise, you have to go at the each and every network you're checking. And it is also not possible to configure in all the networks because it's a limited number of devices limited number of router you can configure through the RIP. There is also some limitation. But EIGRP and OSPF, mostly all the ISP, I mean Internet Service Provider, they uses that concept. Okay, so let's move ahead with this. Sir, one more Shimon. doubt. Sir. Yeah. Sir, that in EIGRP we are giving one number that is autonomous number, right? Yeah. But there is no area in the EIGRP. No area. In EIGRP, no need to give the area. But for the OSPF, you required area. Every protocol has some specification, na? So something will be different. Then only we are going for this, na? Number of devices also will vary. I mean, Yes, sir. maximum devices you can configure here, and its name itself you can understand, like open shortest path first, right? So it's followed as the first. If I want to go to Mumbai, so what will be my shortest path? If I'll go by train, or I can maybe I can go by bus. Can go by flight. So my shortest path will be what? By going by flight, right? So here the same way like OSPF will follow the shortest path while sending the mass packet from the different router. Suppose I have 10 router here, and there will be also some redundancy in between router. Okay, so what I'll do in this case, there will be many paths to send to the destinations. But what OSPF will do in this, I am not connected 10 routers. I am just giving some example. You can just try to understand. Like suppose I have a 10 router here, 1, 2, 3 is there, and the rest remaining not directly connected routers. Maybe some router is connected in a branch. Okay, so this side, some router in this side. Some router, 2 to 3 router is on the same path only. Same router only I have connected, and I want to send the packet to my particular destinations, right? So in this case, there will be a many path to send that, because you can also understand. Okay, sir, the packet can be go in this way, this way. Many paths will be there to reach the destination. So what OSPF will do? OSPF will not go ahead with the many path. It will find which path is the shortest one. Shortest in the sense of it should take less time. Okay, the main thing is that it should have that the first major concern, like delay should be less. Okay, minimize the delay, jitter should be less, and your bandwidth should be high.
So bandwidth is the things like it will be allocated by the service provider, internet service provider. It will be fixed, okay. But only the differences will come out with the delay. Okay, throughput. You can say that throughput. The throughput only varies, right? So it will check whether throughput should be high and along with the time should be less. So time also, that is the major concern. So on that basis, it will calculate that which path should I follow to reach that what destinations. So accordingly, OSPF find the route. Route means just it's a kind of a path that it will find it, and accordingly it will deliver the packet to the destinations. So that is the concept in under the OSPF. So let's move ahead with the next one. What are the things I have configured? Network 192.1 done, 10.01 done. Okay, both Sure. directly connected network. Yeah. Tell me. So then we say in that sense, like in EIGRP, it does not find the shortest path, whereas No. OSPF has that ability. EIGRP also find the shortest path, but the thing is that this OSPF has more and more advance of EIGRP. I mean, it doesn't mean that EIGRP अगर आप कॉन्फ़िगर कर दिए हो तो अब वो लॉन्ग पाथ से जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, ये हम कह सकते हैं कि OSPF हमारा ज्यादा डिवाइस कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होता है. और क्या हो सकता है कि OSPF में एक है कि आप उसको एरिया वाइज आप उसको डिफाइन कर सकते हो. हर डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में आप किस लोकेशन पे OSPF डाल रहे हो, उसको एरिया वाइज अगर हमें कोई प्रॉब्लम आता है ट्रबल शूटिंग कर सकते हो. और वो एक बेस्ट पाथ फाइंड करने में OSPF एक प्रोटोकॉल जो है वो दैट विल बी हेल्पिंग यू. बट इट डजंट मीन EIGRP भी तो जोन वाइज डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हाँ, तो EIGRP इस इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बोलोगे कि नहीं ये लॉन्ग पास कर रहा है, वो भी शॉर्टेस्ट पाथ करेगा. बट द डिफरेंसेस इज दैट इन EIGRP OSPF कि OSPF का फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है वो बेस्ट राउट को फाइंड करने के लिए होता है. हर प्रोटोकॉल जो जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है सबका रहेगा बेस्ट राउट, लेकिन OSPF जो है सबसे कम डिले में कोशिश करता है पैकेट को सेंड करने के लिए. इसीलिए ज्यादातर इंडस्ट्री में OSPF नहीं तो EIGRP यूज होता है. EIGRP भी बहुत जैसे होता है ना, कोई चीज मतलब बहुत एक होता है बहुत बेस्ट है और एक थोड़ा बेस्ट से थोड़ा कम है और एक होता है उससे भी कम है. तो हम कंपैरिजन करें अगर तो OSPF फिर उससे पहले EIGRP आप यूज कर सकते हो, लेकिन RIP तो बहुत कम जगहों पे यूज होता है, कम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हैं क्योंकि उसका लिमिटेड नंबर ऑफ होप्स होते हैं. इसके वजह से होप काउंट की वजह से वो ज्यादा यूज नहीं होता है. और उसके बारे में और डिटेल में तुम लोग ये भी कर सकते हो, LMS में पढ़ो, वहां पे पूरा डिटेल में इसके बारे में डिफरेंसेस पूरा क्लैरिटी के साथ दिया गया भी है. मैं जो बोल रहा हूँ वो भी है वहां पे, और भी चीजें वहां पे बताया गया है तुम्हारे मॉड्यूल्स में. So I'll recommend you to go ahead with that models. How many of you have gone with the model of the EIGRP, RIP and OSPF? Did you get that? How many of you have gone? पढ़े हो ये मॉडल्स तुम लोग अभी तक? Raise your hand. कोई पढ़ा नहीं है, इसीलिए तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो. वेल में मैं पूछ रहा था BGP के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे? पढ़ाऊंगा BGP. ओके. तो कितने लोग गए हो ये मॉडल पे? आई मीन EIGRP, OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल वगैरह कितने लोग कंप्लीट किए हो मॉड्यूल में? नॉट हियर, नॉट ओनली इन लैब, इन द थ्योरी. तो कोई नहीं पढ़ा. नोबडी हैज स्टडीड. ऐसे नहीं करने, ऐसे चलेगा नहीं तुम लोग का. तो सोच रहे हो खाली क्लास कर लेने से हो जाएगा, दैट विल नॉट वर्क. हाँ देखो एक लड़का, या टेल मी Subhadeep, tell me about EIGRP and OSPF. He has gone through the module, he will explain it now. Subhadeep. सर वही अभी पूछ रहा था ना BGP के बारे में. अच्छा BJP के बारे में नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम लोग बताओ how many of you have gone through the LMS of EIGRP, OSPF and RIP? How many of you have gone through this topic from your CCNA modules? Nobody. So I will recommend you all of you today because we are going to complete this OSPF.
Afterwards, you all have to read that in detail about that OSPF, RIP, EIGLP, everything from the model. You'll get more and more clarity. Okay, so let's move Sir, ahead. one more doubt, sir. This IP means we are giving that process ID and the area number. So if area, if we are giving routing means if we are setting one router in one area, then another it will not communicate with the another area. Or Another, no, I will check it. I will check it. I'll configure the same thing, what question you have asked, and I will try to communicate and let's see what is the result coming. Then I'll answer you. Okay, and just wait. and the Yeah. same about process ID also. So If we process. Yes, yes, I will check it. चलो तो अभी हम लोग नेक्स्ट राउटर में पहुंचते हैं, राउटर नंबर 2. ओके, and then we'll go ahead with this. Quantity. So here, the same thing, you can check the directly connected network and accordingly you have to configure those network with the OSPF. So just type the command do show IP route. Sir, which of these protocols is used primarily in this in today's world? Like This which was is prioritized more? yeah, generally OSPF, and some company they use as EIGRP also. Okay, sir. So just see, the next one is the router. We have to configure OSPF. So just type the router OSPF. Take the process ID. I have used process ID previously. What ID I have used? 10, right? Let 10, it sir. be 11. चलो, तो जिसने क्वेश्चन नहीं पूछा है उसका भी बाद में चेकिंग कर देता हूँ. 11 में डालता हूँ और मैं एरिया को भी चेंज कर देता हूँ. देखो क्या होगा उसके बाद. यहाँ तो ठीक है, नेटवर्क में डालूंगा अभी. तुम लोगों को कल दिया था ये टास्क, मेरे से ही पूछ रहे हो. देखो कल मैं क्या बोला था तुम लोग को कि चेक करना है डिफरेंट ऑटोनोमस नंबर डाल के क्या पिंग कर रहे हैं, नहीं किया है, कर रहे हैं. आप लोग चेक किए हो? हैव यू चेक्ड और नॉट? यस गाइस, टेल मी. अभी यस कोई सर, नहीं कर रहे। नहीं कर रहा है ना, इसलिए मैं दिया कि तुम लोग प्रैक्टिकल मैथ थ्योरेटिकली बोल दिया कि हाँ नहीं करेगा पिंग डिफरेंट ऑटोनोमस नंबर डालने से. उसको एक्सपेरिमेंटली चेक करो कि सर ने सही बोला है या झूठ बोल दिया. तो वो तुम्हारे ऊपर है. तुम जितना एक्सप्लोर करोगे उतने मास्टर बनोगे इसमें. So what I'll do, I have changed the process ID and now I'm going to change my area also. Let's see. चलो तो मैं एरिया भी हटा देता हूँ. 0 डाला था उधर, इधर मैं 1 डाल देता हूँ. नेक्स्ट. व्हाट इज टेलिंग? लेट्स सी. रीड करो मैसेज. देखो अभी से ही मैसेज तुम्हारा आने लगा. बोल रहे क्या, रिसीव इनवैलिड पैकेट मिसमैच एरिया आईडी. देख रहे हो, फ्रॉम द बैकबोन एरिया मस्ट बी वर्चुअल लिंक बट नॉट फाउंड Yes, फ्रॉम sir. दिस. तो तुमको जो है अगर सीम जोन में रहना है तो आपको जो है एरिया का आईडी मिसमैच मत करो. सर इधर एरिया आईडी सेम देने से ही हो जाता है, मतलब प्रोसेस आईडी अलग चलता है ओएसपीएफ का? देखो एरिया को सेम डालो, फिर ये बार बार मैसेज करेगा. जस्ट चेंज द एरिया. एरिया 0 कर दो. सॉरी, नॉट टेकन. एक
आईडी भी तुम्हारा मिसमैच कर, एरिया आईडी तो मिसमैच कर रहा है। एरिया को मैं 1 डाला हूँ, 0 डालता हूँ। Change from 1 to 0. Process, what is selling? Process line never this is from the loading to full loading. Okay, fine. Now let's move ahead with the another network. That was my 20 dot series. Simply I have to change it here 20. Network required 192 series. तो आप कमांड को एग्जिट कैसे कर रहे हैं? मेरा वो सेम मैसेज कंटिन्यू हो रहा है। मतलब नेक्स्ट कैसे, क्या बोल रहे हो? एग्जिट तो मैं नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। और अच्छा, पुराना वाले कमांड कैसे ला दे रहा हूँ मैं, वो बोल रही है क्या? प्रीवियस हाँ कमांड। हाँ अच्छा, तो उसके लिए क्या करो तुम, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे तुम अभी कमांड टाइप करने वाले हो, तो यहाँ से अपर जो अप पेज करके जो एरो होता है ना कीबोर्ड में, पीजी पीजी यूपी ऐसे करके लिखा है ना कीबोर्ड में, देखो एरो, अपवर्ड एरो डाउनवर्ड एरो, ऐसा वो है। वो बताए सर, मैं नया कमांड बोल रही हूँ, लाइक वो मैसेज बार बार आ रहा है ना, उसके अच्छा बाद अब अच्छा अच्छा, नया वाला कमांड में कैसे? एंटर 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 मारो, 2-3 बार एंटर मारो, हो जाएगा। Just a minute, guys. Sir, here you have changed the process ID or not? Because it was previously 11, you are also again you have given 11, right? Router OSPF 11. I think sir will come back in a while, like in some time, so you can ask him again.
Well, so have you done till that, all of you? Sir, one doubt, sir. Sir, you have changed the idea or not? Because you have Your again voice given. is breaking. For now, hello. Yes, sir. Am I audible right now? Yeah, tell me. Yes, sir. I am asking that have you changed the area? Like you have again given router OSPF 11, so area is not changed. Sorry, area and process. You have changed the Process process. ID, I have kept it the same one. I have only changed the area because area, if I'll be defining that, different area. So what is the issue is happening? Just read the message. Yes, sir. Did you read the message? Yes, sir. Mismatch area ID from Yes. backbone area must. Yes. So that's why. Okay, so let's So, move sir, it back. does not depend on the process ID. Process ID, I have kept this, different one. Let's see what I will do when I'll try to ping. Is there any problem is happening or not? So I will check it. So let's just wait for a few more minutes so that once we'll complete the configuration, I have used a 10 process ID for one router, 11 I have used for the second router, and I'll use 12 for the third router. And then we'll check with the connectivity between different neighboring router, and let's see whether the process ID, if we will be giving different one, whether it's work or not. So we will verify right now. Okay. So let's move ahead with the next one, next router. There I'll change my process ID again. I'm in the third router. So first check the directly connected network. There are two networks directly connected. In previous router, there were three networks were connected. So here, as usual, first of all, you have to type router OSPF and then give the process ID 12, 10, 11, 12, and this following like that. And the network. Sir, Just can you give two same process ID and one different? Then we'll be able yes, to know. yes, yes. You can try. Not an issue. Yes, sir. If you want to give the other process ID like router OSPF, and suppose 10 I have used 11 and then again I'm using 10. Done. Now the next concept is called our network one. I mean, we have to define the network. So network 20.0.0.0 followed with the wildcard mask. So it should be 0.255.255.255, and then we have to give the area. So yeah, I need to use 0 only. Sorry, what happened? Process 10 neighboring CLM loading for the three. Okay, fine. So just move ahead with the next one. 192. Dot 0. Here you type wildcard mask 0.0.0.255. Sir.
Okay. So we have done it for all the routers, and some router we have changed the process ID, some router we have kept the same one. And let's ping that. Area is same for all. So just ping 192.168 dot. Let it be 2.2. The second, first PC of second router. I'm just trying to ping because they are in the different process ID. But the third router is in the same process ID. Yeah, that's great. So it's pinging. So let's check with the other router. I mean other devices as well. 2.3. This one is also fine. This one is also pinging. Okay, and now what I'll do, I'll check with the third PC 3.2. I mean, first PC of third router. So what differences you are finding it? Just see, I just mark it. Something is differences we are getting it here. I'll just analyze and you also analyze it. What differences we are getting over here? Let me again ping In my this. 3.2 it is showing host unreachable. 3.2. No, 3.2 is working. I mean, 3.2 just I have checked now. Now it's getting the reply from the first device of the third router. Everything is fine. And if I check with the 2.3, let it be. Zero percent loss. First attempt 25% loss. Second time it's showing that 0% loss. And here, if I'll go with the 2.3, 2.2, 0% loss. Yeah, I mean, no differences we have found. I mean, whether you are using process ID same or different, doesn't matter. You can use any ID. That's all. But in area that you have to must, you have to give that the same values. Okay. So if you have completed, I'll just create one assignment in the Google Classroom. You all have to upload it. And yesterday I didn't get time. I had a back-to-back so many classes. So I have not enabled your checkpoint exam as well as I have not shared your packet tracer things. So today in the class only I'll do all those things. So I have around 1 hour left for this class and I'll do it all this thing. You all have to be there in the class and you complete this task. If you have completed, so I'll give you one more class work. You all have to do it. That work I will not do. You need to do like what you have to configure. You have to configure like 2 routers for one geographical region, Hyderabad regions. Another 2 router you'll configure for Bangalore regions, and another 2 router will be configured for Bhubaneswar regions. Okay, 6 router you have to connect. And you have to define that particular locations and you need to configure that OSPF, okay, in each and every locations. And what you'll do, you have to also configure, okay, WAN I have not, frame relay and all I have not taught. So MPLS also I have not taught. So what you will do, simple, I mean, whatever we have completed till now, related to that concept only, you have to configure that two router for each geographical regions, Bangalore, Hyderabad and Bhubaneswar regions, and just try to ping from each and every location, but make sure that the Bangalore 2 PCs, you'll connect in each region, 4 PC you have to connect. The 2 PC of the Bangalore regions should not communicate to any of the device, any of the geographical regions PC. But 2 PC you have to just restrict that. So can you do that?
Just try all of you. That concept Uh, also I taught you. Sir, So but just when we are connecting it, we are not able to change the area in the three router configuration. So how will change the area? Can you tell? changing area. I mean, just type no network, that network ID, wildcard mask, and area. Just give that. It will be changed. Entire area, network, everything will be changed. Then you have to again type that network and what area you are wanted to assign. That you can do it, or you can rewrite that. If area 0 you have written na, so if it is not taking area 1, so what you'll do, you'll type the command again, the same command, just but correct the area. That I did it in that way only. I have when I have written area 1, it was not taking. So what I have typed, network, that particular network detail, then wildcard mask, and then rewrite that area 0. Then Yes, sir. it started work Sir, like that. Sir, what is the last bit you said? Could you repeat? Yeah, I said like configure 2 router for three different locations like Bangalore, Hyderabad, and Bhubaneswar. And in each location, four devices, end user devices would be connected, and 2 devices of the Bangalore should not communicate with the any people in the network. I mean, in the entire 6 routers of whatever device you have connected. So 2 devices you have to Okay, sir. restrict, because these Okay. are the criminals. So these are the attackers. So they should not be allowed to communicate in other devices of any other locations. So can Yeah. you show the router 3 configuration once? Actually, in my third network, it is not pinging. Second network, it is pinging. Router the configuration. Yeah. This two only in command I have run this thing. And before of that, there was a router OS that you have to also type. These 3 things, just write it down or you can type it. Sorry, this is for the 20 dot. Okay, okay. So one more for the 192. This one. This one also you have to type 192.168.3.0. So I mean this command, and the next is this one, second one this, and before of that there For was the OS. area of the routers, we need to keep all the routers area same. Yes. Okay. Okay, so just try all of you. I'm just making your exam enable, and I'm just checking your packet tracer activity. Where is it? There. Sir, so the packet tracer activities you will be posting for yesterday and today's classwork and this homework, right? Yeah. First, study class was EIGRP and OSPF today's one that you have to, the assignment you have to upload in the Google Classroom. Another Okay, packet sir. And tracer. sir, the homework that you gave right now? Yeah, the classwork, that is your classwork, not homework. I mean, it's right now you have to do. 1 more hour you have, I'm there for Okay, 1 hour. sir. So you have to do it right now. Okay, sir. So, Yeah, tell me. actually, in my third network, the problem is still there. I can't understand. Which I've configured correctly. I checked. To share your screen. Yes, sir. Sir, so we have to for that classwork we have to configure four routers for each location. No, not for two router. And the Bangalore, the 2 router of Bangalore, we have to restrict from communicating with the Hyderabad and Bhubaneswar. No, not two router, 2 devices of the Bangalore locations Okay, 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 from any one of the router. okay, sir. So, can you see my screen? Yes. Go to the router 3.
CLI is not opening. Again, full screen. CLI नहीं ओपन हो रहा है, या हमें भी इधर दिखाई नहीं दे रहा है. The meaning? I said just if you click on the router 3, it should open with a CLI, na? So that CLI, I cannot see that. How check that you whether you Sir, messing? she has shared only the Cisco packet tracer window. She has Full to screen share her just entire sharing, na? screen. Yeah, Oh, full okay, screen. sir. Okay, sir. Yeah. Yeah, go to the router So can 3. I see? Yeah, that's visible. Yeah. Router OSPF is fine. 20 dot is also okay. Yeah, it's everything is fine, na? What is the problem? It's not pinging. Yes, yes, I'm pinging right now. Just see, it is not pinging. Mm-hmm. Maybe in the middle router you have made some mistake because packet is going via second router. Okay, okay. So you just go to the middle router, second one. ये तुम्हारा मे बी फर्स्ट और सेकंड राउटर का प्रॉब्लम, थर्ड राउटर तो ठीक है. So you are pinging from which device? From the first router device or which router device you are pinging? Yes, sir, from the first PC of the first network. Okay. So here, did you configure the default gateway in the third router? Just check if your default gateway ID has been configured or not. That was the old command. I mean, कल जो हम लोगों ने किया था वो वाले कमांड में देखना पड़ेगा तुमको. इसके सीरियल इंटरफेस पे जाके देखो. SC पे होना चाहिए था. FA दो इंटरफेस है. FA 0/0 पे चेक करो IP तुमने डाला है नहीं. जस्ट स्टे देयर. हाँ वही. नहीं तुमको नेक्स्ट कहीं नहीं जाना, वही पे राउटर के पास कर्सर वही पे रखो बस, वो दिखा देगा ऑटोमेटिक. हाँ जस्ट स्टे, जस्ट वेट. या फास्ट इथरनेट पोर्ट लिंक इज अप. ओके एंड सीरियल इंटरफेस इज आल्सो फाइन. 20.0.0.2 ठीक है. फिर तो सेट हो चुका है आईपी. ओके ओके. अभी जाओ उस पे, वो मिडिल वाला जो राउटर है, सेकंड राउटर, जस्ट गो देयर. या like same way, just stay. Just stay. Okay, 0/0, that is fine. Serial 0/0 20 dot, or serial 0/1 is 10.0.4. Yeah, this one is perfectly correct. Now go to the first router. The same thing. Just stay. Wait. बस. 192.168.1.1/24 ठीक है. 10.0.0.1 IP वगैरह तो सब असाइन है तुम्हारा. ओके देन जस्ट गो टू द राउटिंग प्रोटोकॉल ऑफ दिस सेकंड राउटर. अच्छा उसमें देखो तो एक डिवाइस में तुमने IP डाला है कि नहीं. PC4 में जाओ. एक मिनट. वही जैसे पहले आया था. हाँ बस वेट.
192 गेटवे है, डेस्कटॉप पे क्लिक करो, क्लिक ऑन डेस्कटॉप, यस, जस्ट वेट। 192 168 3.92 करेक्ट है, क्लोज करो इसको। Okay. Okay. You try to ping from PC02, ये जो सीरियल इंटरफेस है ना 20.0.0.2, उसको पिंग करो तो PC0 से। हाँ, राउटर तक पैकेट पहुंच रहा है कि नहीं, थर्ड राउटर तक, वो चेक कर लेते हैं। पिंग 1, हाँ 20.0.2, यस, हिट एंटर। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारा राउटर, थर्ड राउटर तक भी पैकेट जा रहा है। ओके, अभी तुम पिंग करो 192.168.3.1 3.1। हाँ, अच्छा, इसका मतलब जो हमारा डिफॉल्ट गेटवे है वहीं से पिंगिंग बंद हो गया है। तो ठीक है, तुम क्लोज करो इसको, थर्ड राउटर पे जाओ, यस, थर्ड राउटर का लिखो इंटरफेस FA0/, एग्जिट करो यहाँ से, या टाइप इट INT FA0/0। क्या है इंटरफेस, चेक कर लो एक बार, तो 0/0 दिखा दो। ओके, 0/0 IP एड्रेस, वन 192 लिखो, 192.168.3.1। सबनेट मास्क 255, yes, done। now just go to the PC, ये हो गया, इसको क्लोज कर दो। PC में जाओ, जस्ट इसमें जाओ, IP config, हाँ हाँ वही वही वही, IP config नहीं, यस, जस्ट वेट, 192.168.3.1, ठीक है। हाँ, अभी अभी पिंग करो तो इसको क्लोज करो। वन 168 लिखी है तो पता नहीं चल रहा है, 168 3.1। सर IP 3.2 है। नहीं, वो ये इसको डिफॉल्ट गेटवे को पहले पिंग कर रही है, 192 168 3.1 तो कर नहीं रहा, तो फिर डिवाइस तो नहीं करेगा। ठीक है, इसको क्लोज कर दो। तुम्हारा राउटिंग प्रोटोकॉल एक बार दिखाओ मेरे को, 200 IP राउट करो तो वही राउटर में, राउटर थर्ड में, यस, 200 IP राउट। You can exit from here first. Just wait. Okay, okay. तो सारे कंफिगरेशन हो रखा है, ठीक है, इसको क्लोज दो, राउटर 2 में जाओ। हाँ, वहां पे ये कमांड चला दो, 200 IP राउट। यहाँ पे तुमने 3.0 का जो डिटेल है कॉन्फ़िगर करने के बाद भी इसके पास नहीं आया है। ओके, मतलब तुमको जो है एक बार जाओ इसके नेटवर्क में, राउटर 2 का जो तुम लिखी है ना कमांड, नेटवर्क 20.0.0 वाला, और एक था 192.168.3.0, इसके कमांड को अभी तुम फिर से एक बार टाइप करो तो, नेटवर्क
नेटवर्क 192.168.2.0 सॉरी ये नहीं ये तो इसका खुद का है जस्ट वेट टाइप करो 20 डॉट नेटवर्क 20.0.0.0 फिर इसका वाइल्ड कार्ड मास्क डालो 0.255 0.255 और एरिया 0 पर का क्या दिखा रहा है इनवैलिड नेटवर्क 0.255 ठीक है एंटर करो तो सर वो राउटर OSPF में जाना होगा पहले। राउटर OSPF नहीं डाली अच्छा ओके लिख लो इसको राउटर OSPF और आईडी डाल दो यस नेक्स्ट ठीक है अभी इसको क्लोज करो और फिर से पिंग करो तो डिवाइस पर इसी डिवाइस इससे करो सेकेंड राउटर के पीसी से करो तो थर्ड राउटर को वो पहले हो रहा है कि नहीं कम्युनिकेशन बट सेकेंड से थर्ड का ही प्रॉब्लम हुआ है यहाँ से नहीं जा रहा है पैकेट अच्छा तुमने इसके इंटरफेस पे आईपी वगैरह एसी तुमने चलाया तो तभी जाके शो कर रहा है ओके क्लोज करो तो इसको सीरियल इंटरफेस एक मिनट इसको क्लोज करो राउटर 2 में जाओ राउटर 2 यस टाइप करो INT यहाँ से एग्जिट कर दो एग्जिट हियर यस be in the global company yeah just wait just type serial SC 0/0 enter then type IP address and then type that 20.0.0.1 and then subnet mask you can type 255.0.0 enter now end mask oh sorry नॉर्मल ये वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं चाहिए नॉर्मल सबनेट मास्क डालो हाँ 255.0.0 डन नेक्स्ट हाँ एक मिनट अभी तुम इससे इसको पिंग करो राउटर PC2 से राउटर 3 का 20.0.0.2 को पिंग करके देखो वो हो रहा है क्या पिंग 20.0.0.2 that's great अभी हो जाएगा अब तुम पिंग करो पिंग 192.168.3.1 को पिंग करो तब अभी पैकेट जा रहा है राउटर 3 को उसके दूसरे वाले पोर्ट को नहीं पहुंच पा रहा है उसके एक इंटरफेस को जा रहा है दूसरे इंटरफेस को नहीं जा रहा है ओके तो तुमने नेटवर्क 3.0 20.0 उसमें दिया है एक बार तो राउटर 3 में जाओ फिर से प्रॉब्लम हो रहा है 192.168.3.0 के साथ ही हो रहा है बाकी सब ठीक है
ओके, तो डायरेक्टली एक बार तुम लिखो कमांड राउटर ओएसपी है, अब प्रोसेस आईडी दे दो और वही 10 डालो, ठीक है। और फिर लिखो नेटवर्क 192.168.3.0 स्पेस 0.0.255 एरिया डाल दो 0, यस हिट एंटर, ओके। और फिर एक बार और नेटवर्क डालो, तो नेटवर्क 20.0.0 और व्हाइट कलर मास्क चेंज कर दो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं क्या? एक मिनट रुक जाओ, पहले इसका ट्रबल शूटिंग होने चाहिए थोड़ा, चेक कर लो। हो गया, एंटर मारो। हाँ, अभी तुम इसको पिंग करो, इसको क्लोज करो। या नाउ पिंग फ्रॉम, जस्ट वेट, पिंग फ्रॉम PC4, जस्ट वेट, PC4 टू PC0 को पिंग करो। ओके, PC0 पे जाके मेरे को दिखाओ तो उसका IP PC0 का। क्लोज इट। राउटर 1 का कॉन्फ़िगरेशन शो करो, तो राउटर 1 ये, जस्ट वेट। राउटर 1 एक मिनट, इसको क्लोज करो। PC पे से PC0 पे जाओ। प्री पिंग करो 1920 डॉट तो कौन से पीसी से? PC0। यहाँ से पिंग करो 20 डॉट, वेट 20.0.0.2। हिट एंटर। अच्छा, फिर पिंग करो तो पिंग 192 डॉट, ये तो ठीक है, हो रहा है 192.168.1.1, सॉरी 3.1 डालो। एंटर मारो। 3.1 क्यों मिलेगा? 3.1 बाकी सारे पैकेट तुम्हारे सेंड हो रहे हैं। सर एक बार सिमुलेशन में चेक कर लीजिए। एक बार क्लोज, इसको क्लोज करो तो ये कमांड प्रॉम्प्ट, हाँ कहाँ, राउटर 3 में फिर से जाओ एक बार, राउटर P क्या, एक तो कुछ गलत तो मतलब चाहिए, जरूरी है 3.1 तो टैली है, 192.168.3.1 ठीक है, everything is fine। एक काम करो, ये 3.0 का जो इशू आ रहा है ना, तुम इसको, ये वाला डिवाइस को रिमूव करो, तो ये
जस्ट क्लोज इट, ये तुम्हारा CLI को क्लोज करो, हाँ। और यहाँ पे ये स्विच स्विच से जो राउटर को कनेक्ट किया है ना, वहाँ वहाँ इसको ये स्विच को हटा दो, स्विच को रिमूव करके दूसरा स्विच लगाओ। ये इसको रिमूव करो, स्विच को हटा दो, पूरा स्विच। क्रॉस क्रॉस करो, ऐसे नहीं हटेगा ना, क्रॉस में जाओ, लेफ्ट साइड लेफ्ट कॉर्नर पे क्रॉस है। You cannot directly cross here. You have to go to the left side of the corner. There is a मल्टीप्लीकेशन साइन एक दिखेगा तुमको, टॉप लेफ्ट कॉर्नर देखो, एडिट जहाँ के से नीचे, एडिट के एडिट के नीचे, नीचे। हाँ उसके लेफ्ट में, बस बस उससे नीचे, थोड़ा नीचे जाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साइन दिखा, हाँ बस बस उससे पहले, आफ्टर, हाँ डिलीट, यस उसको करो, और ये स्विच को डिलीट कर दो बस। अभी क्या करना है तुमको, दूसरा स्विच लगाओ, कोई भी स्विच लगाओ दूसरा। ठीक है, अभी उसको कनेक्ट कर दो स्ट्रेट थ्रू केबल से। कभी कभी स्विच का भी इशू हो जाता है, वो लोग पैकेट को ये नहीं करने देते, तो ये फिजिकल डिवाइसेस में भी होता है, लॉजिकल में भी हो जाता है कभी कभी। अब इसको कनेक्ट करो, स्विच को फास्ट इथरनेट पोर्ट से। फास्ट इथरनेट ऊपर ऊपर, यस ठीक है। अब अभी क्या करना है तुम्हें, अभी राउटर को जाओ और राउटर में एक IP डालो। तो तुमने 3.0 इसके लिए लिया था, बस डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए, और उस पर IP असाइन किया था। अभी ये करो, नेक्स्ट नेक्स्ट जाओ, एक IP लिखो, वहीं पे करना था। ठीक है, डिवाइस में कॉन्फ़िगर कर दो, और इसको अगर कॉन्फ़िगर द डिवाइस फर्स्ट IP। तो और एक बार रिपीट करेंगे क्या बोला आपने? उसमें जो है, ये जो राउटर कनेक्ट की है ना, उसके इंटरफेस पे फिर से IP डालना पड़ेगा तुम्हें। एक बार लिखो तो कमांड, 200 IP राउट यहाँ पे। ठीक है, सारे कनेक्शंस तो हैं, ठीक, ओके। अभी जो है इसको क्लोज करो। अब PC, तुम PC4 से PC1 को कम्युनिकेट करो, तो PC4 के IP पहले डाल दो, इसमें IP नहीं है, आई थिंक होगा शायद, हमने तो डिवाइस नहीं हटाया था, खाली स्विच हटाया था, I think। हाँ है तो ठीक है, इसको पिंग करो। ओके, नेक्स्ट टाइप पिंग, फिर से यहीं पे पिंग लिखो, पिंग 10.10.0.0.1। ठीक है, करो। ये थर्ड राउटर के इंटरफेस पे जाओ, FA0/0, गो टू द थर्ड राउटर, थर्ड राउटर, यस। राउटर क्लिक करो, CLI में जाओ, FA0/0 इंटरफेस को एंटर करो। इस एग्जिट हियर, एग्जिट करो पहले।
let's type int fa 0/0. हाँ, यहाँ पे आईपी डालो, आईपी एड्रेस, just wait, 192.168.4.1 4.1 and सबनेट मास्क डाल दो 255.255. ठीक है, अब फिर अब OSPF में भी चेंज करना पड़ेगा, राउटर OSPF लिखो, एग्जिट करो यहाँ से। टाइप करो राउटर OSPF, ठीक है, एंटर। इसके बाद लिखो नेटवर्क, वन 192.168.4.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क डालो। जीरो डॉट जीरो होगा, गलत है ऑलरेडी। यस, एरिया डाल दो, एरिया 0, ठीक है, एंटर कर दो। हाँ, एक और लिख दो आईपी नेटवर्क 20.0.0 वाला। change the subnet mask. फिर तुमको क्या करना है, आप पिंग करो इसको, इसको क्लोज करो तो। यस, हाँ, इसके डिवाइस में जाओ, ये PC5 में जाओ, इसका PC4 को छोड़ो, PC5 में जाओ। डेस्कटॉप, इसमें आईपी है तो एक बार आईपी चेक करो तो इसको चेंज करो, 4 इसका आईपी डालो 4.3 और 4 डिफॉल्ट गेटवे भी चेंज करना होगा, वो नहीं, डिफॉल्ट गेटवे 4.1। Yeah, so Soubyadeep, the question was that like we have three locations. Am I audible, Pradeep? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Question was that like we have a three location: Bangalore, Hyderabad, and Bhubaneswar, and you have to connect two router in each locations, and all the devices can ping among themselves from the different routers. But the condition was that any two devices of the Bangalore location, they cannot communicate with the other locations. That was the scenario, and you have to configure with the OSPF. Sir, for one location we have to use two routers. No, two router for each locations. Okay, and PCs, 4 PCs. Yeah, four PC in each locations. And for one router we have to use 2 PC, and for another one we have to use 2 PC. Yes, right. And the two routers connected to each other and go ahead in this way for 3 road locations. Yes. Yeah. Done. तो Okay. पहले वाले PC4 का भी आईपी चेंज करना होगा ना, क्योंकि सबका आईपी चेंज कर दिया। चेंज करो। कौन सा PC4 दिखाओ एक बार। हाँ, फर्स्ट वाले का तो PC4 का, हाँ, PC4 का भी चेंज कर दो। क्लोज करो इसको, अभी पिंग करो तो इन दोनों पीसी को पहले पिंग करो, ये PC4 से PC5 को पहले पिंग करके चेक करो तो।
4.2 डालो, 4.3 डालो, हाँ ठीक है। अभी 4.1 को पिंग करो। just wait, stay here only, yeah, 4.1 default gateway just change. Okay, now ping to 10.1, ping 10.1, 10.0.0.1. Ten dot zero dot zero dot one is not pinging. Okay, and from the PC0, just to go back, PC0, यहाँ से पिंग करो तो 20.0.0.2 को। अच्छा, इधर से प्रॉब्लम नहीं है, 20 डॉट तक तो ठीक है। जो इशू हो रहा है तुम्हारा, राउटर 3 से प्रॉब्लम कर रहा है। राउटर 3 को भी चेंज कर, तुम एक काम करना, सुनो, ये जो राउटर 1 एंड 2 है इसको रखो। तुम पूरा ये जो डिवाइसेस है ना, राउटर स्विच और जितने भी ये डिवाइसेस है, इनको रिमूव करके फिर से रिकनेक्ट करो। और जो आईपी जैसे पहले तुम डाल रही थी वैसे ही डालना, फिर चेक करना, आई थिंक उसके बाद हो जाना चाहिए। एक्चुअली ये डिवाइस का कुछ प्रॉब्लम इश्यू कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो लॉजिकल कंसेप्ट है, जितने भी आईपी मैंने देखा, एवरीथिंग इज फाइन, ओनली द प्रॉब्लम इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस मे बी फिजिकल डिवाइसेस। सो आई मीन दिस राउटर स्विच एंड दिस एंड डिवाइस, इनको चेंज करना पड़ेगा तुमको। तो ये तो सर जितने नेटवर्क का चेंज करो या पूरा स्क्रैच से करो पूरा चेंज? नहीं, फर्स्ट 2 राउटर का कोई दिक्कत नहीं है, उसका पिंगिंग हो रहा है, उन लोगों में कोई प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आ रहा है तुम्हारा थर्ड राउटर से शुरू हो रहा है। ये थर्ड राउटर का पूरे नेटवर्क को रिमूव कर देना, और फिर से एक केबल जो कनेक्ट कर रही है ना, सीरियल इंटरफेस वाला, वो केबल कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी मतलब पिंगिंग हो रहा है, वहां तक पैकेट राउटर 3 तक पहुंच रहा है। लेकिन राउटर 3 का दूसरा जो इंटरफेस तुम्हारा है, FA0/0 वाला, वो इंटरफेस पे तुम्हारा पैकेट नहीं जा रहा है, वहीं पे रुक जा रहा है। उसके बाद का कम्युनिकेशन बंद हो जा रहा है। अच्छा, सिमुलेशन मोड में उसको करो तो एक बार, 1 मिनट में, जस्ट गो बैक, शेयर योर स्क्रीन। हाँ, सिमुलेशन में डालो तो उसको, पैकेट वहां सेंड हो रहा है क्या? या ठीक है, जस्ट वेट, को तो जा रहा है। दूसरे 1 में भी जा रहा है। फिर इधर से भी जा रहा है, आई मीन राउटर 1 तक। Okay, here it is getting crossed. Router PC, that is fine.
सिमुलेशन में तो तुम्हारा शो कर रहा है और पैकेट भी रीच कर रहा है डेस्टिनेशन को। राउटर 2 से 3 को भी आ रहा है। सर एक पार्टिकुलर सोर्स टू डेस्टिनेशन का सिमुलेशन चेक करते हैं। एक काम करो, PC4 को सेट करो सिमुलेशन में और PC0 को करो, फिर चेक करो तो वहां से हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है क्या। तो वो कैसे करेंगे? एक बार शेयर करो स्क्रीन फिर से। तुम क्या करो यहाँ पे सर वो एक्सटेंशंस के नीचे वाला वो मैसेज प्लस वाला यूज कर लेते हैं सर। फिर जो है तुम क्या, ये जो है ना तुम्हारा पर्टिकुलर PC, उसको ये करो, सिलेक्ट करो, पीडीयू पैकेट ले लो, नीचे नीचे है नीचे। एक मिनट, वहां नहीं, इसको हटाओ, इसका जरूरत नहीं। तुम वही पैकेट ट्रेसर में ही रहो, पीडीयू पैकेट एक है लिखा हुआ, टैग पीडीयू लिस्ट। सर वो एक्सटेंशंस के नीचे के नीचे। हाँ। हाँ उसके नीचे अंडों के नीचे वाला जस्ट। हाँ राइट साइड एक और राइट। हाँ ये ऐड सिंपल पीडीयू और सेलेक्ट कर लो सोर्स और फिर डेस्टिनेशन। उसको सेलेक्ट करने के बाद सोर्स सेलेक्ट करो। तो पीडीयू हाँ उसको ड्रैग करके लाओ। हाँ ला वैसे ही पीडीयू पैकेट। यस, और फिर उसको ले जाओ डेस्टिनेशन के पास, उधर PC0 में। नहीं दोबारा नहीं सेलेक्ट करना, एक ही बार सेलेक्ट करके सोर्स से डेस्टिनेशन कर लो। हम PC4 डायरेक्ट सेलेक्ट कर लो। वैसे ही ले जाओ PC4। हाँ राइट, डायरेक्ट। बस प्ले कर दो। नहीं गया, फिर चेक करो। सो नीचे लास्ट स्टेटस इन प्रोग्रेस में। तो मतलब एक और बार बोलिए क्या करना है? फिर से गो बैक, वहीं पे जाओ पैकेट ट्रेसर में ही। तुम्हारा ये लास्ट स्टेटस प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, लेकिन तुम एक बार एक काम करो, प्ले करो तो फिर से। जस्ट वेट। वो पैकेट तुम्हारा ये नहीं हुआ, गया नहीं। यहाँ पर नेक्स्ट PC0 से गया, फिर एक बार फिर से उसको सिलेक्ट करो तो लेट्स चेक। पीडीयू पे जाओ। हाँ उसको PC4 में कनेक्ट करो। और फिर उसी वही से ड्रैग करो। हाँ ले जाओ PC0 सेम वे। या ओके, जस्ट वेट। पहला तो सेल्ड हुआ है, फिर क्लिक बैक प्रोग्रेस। तो आ गया, PC4 से ही चला था राइट। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रेस दिखा रहा है, सक्सेस होना चाहिए। राउटर 0 में कुछ दिक्कत है।
चेक करना होगा। राउटर 0 नहीं तो राउटर 3। राउटर 0 जो है उसका राउटर 2 के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। राउटर 3 का राउटर 2 के साथ हो रहा है क्या? एक बार चेक करो तो, PC4 से PC2 को कनेक्ट ये कम्युनिकेट करो तो हो रहा है क्या? PC4 से नहीं, पिंग करो, इसको छोड़ दो, ये पिंग करके तुम देखो। ऐसे तो हो जाएगा, डायरेक्ट सक्सेस दिखा देगा। रुको रुको, हाँ तुम डायरेक्ट उसको कनेक्ट करो। ओके, गो एट विद द PDU ओनली। यस, राउट PC4 को करो और PC2 को करो कनेक्ट। या दैट्स इट, जस्ट वेट। फिर ड्रॉप किया, एक एक्सेप्ट किया है, PC2 एक्सेप्ट किया। पहले ब्रॉडकास्टिंग किया था स्विच, दोनों को भेजा। फिर PC3 का वो पैकेट नहीं था, PC2 का था, PC2 ने एक्सेप्ट किया है। फिर रिप्लाई करेगा इसको। राउटर 1 में भी डिस्कार्ड हो गया सर। फिर यहाँ पे लास्ट में डिस्कार्ड कर दिया। इसको ना तुम एक काम करो, इसको पूरा फिर से जो है दूसरे डिवाइस कनेक्ट करके, मतलब लॉजिकली सारे IP एवरीथिंग इज फाइन, only the problem is happening I think with the devices and not something some maybe the cables you have cable is also you have connected correctly only. I have seen that serial interface and the fast Ethernet DC-DT cable also you have used. तुम इसको पूरे को ना एक बार फ्रेश एक बार और करो, नेक्स्ट क्लास में मेरे को दिखाना। अगर नहीं होता है तो फिर मतलब सर देखेंगे। पूरा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ थर्ड हाँ, नेटवर्क का नहीं, पूरा पूरा करो, पूरा को एक बार फिर से करो। फिर उसके बाद देखते हैं उसका, उसके बाद नहीं होगा तो फिर मैं तुम्हारा फिर चेकिंग करूंगा दोबारा। सर। लेकिन OS5 तुम वाला तो लॉजिकली आज के अंदर अपलोड करना ना असाइनमेंट, फिर अगर तुम इसको डाल दो अभी फिलहाल, ये मैंने चेक कर लिया ना तुम्हारा करेक्ट है, इसी को अपलोड कर दो, ठीक है। और अच्छा नेक्स्ट वाला ठीक जो है है सर। तुम्हारे पास टाइम तो है कल परसों, उसको फिर से एक बार ट्राई करना कि क्यों नहीं पिन कर रहे। उसके बाद हम अगर अगले क्लास अगले टाइम तुम्हारे करने के बाद भी अगर नहीं पिन करते हैं तो देन यू हैव टू शो मी, आई विल चेक इट क्या इशू ठीक है है। सर। ऐसे तो अभी फिलहाल लॉजिकली यू आर टोटली करेक्ट, तुम्हारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन था, एवरीथिंग इज फाइन। वो में भी डिवाइस का कभी कभी होता है, कभी कभी क्या होता है, और मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा है कि बच्चे लोग सेम IP डालेंगे, राउटिंग प्रोटोकॉल एवरीथिंग सब कुछ सेम डालेंगे, दूसरा स्टूडेंट भी वही डाल रहे हैं, उसका पिंग कर रहे हैं और उस बच्चे को नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, वो डिवाइस का प्रॉब्लम होता है। कुछ कुछ डिवाइस होते हैं जो सही से फंक्शन नहीं करते हैं, वही तो डिवाइस को रिमूव पीडीओ करना। वाला में क्या हम्म। क्या पीडीओ वाला का क्या फंक्शन है? PDU मतलब सिंपल, तुम्हारा जो पैकेट जो होता है ना, हम लोग जब सिमुलेशन जब करते हैं तो हर जितने भी डाटा टाइप जो होते हैं ना, वो वो जो है डायरेक्ट आप पैकेट ट्रेसर में कहाँ से कहाँ सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन क्या है, वो डायरेक्टली उसके थ्रू जो है आप देख सकते हो कि पैकेट कहाँ से सेंड हुआ और कहाँ को डेस्टिनेशन पर। हम लोग जैसे पिंग करते हैं तो पिंग से हमें दिखाता है ना 100% सक्सेसफुल, इतना परसेंट लॉस। तो वो सेम चीज जो है, वो जो प्रोग्रेस जो दिखा रहा है ना, इन प्रोग्रेस, कहीं पे फेल दिखा रहे हैं, तो नीचे में वो सक्सेस दिखा देता है। इट मीन दैट तुमने जहाँ पे डेस्टिनेशन लिया है और जो सोर्स था उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। अंडरस्टूड? हाँ ठीक है सर। ओके ओके, विजुअल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली। हाँ, जस्ट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल डाटा यूनिट का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हम लोग PDU तुम पढ़ोगे तुम लोग OSI लेयर में कि डाटा टाइप जो होता है वो हर अलग अलग लेयर पे उसका नाम अलग अलग दिया गया कि नेटवर्क लेयर में पैकेट बोलते हैं उसको। फिर उससे पहले जो जितने भी लेयर्स होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, सेशन लेयर हो गया, एप्लीकेशन लेयर हो गया, इन सारे लेयर्स में हम डाटा को डाटा ही बोलते हैं, आई मीन इंफॉर्मेशन को डाटा ही बोलते हैं। फिर जब वो जाता है
नेटवर्क लेयर पे तो उसको हम पैकेट बोलते हैं। फिर उसके बाद फ्रेम हो जाता है, यूनिट्स हो जाते हैं, ऐसे चेंज होते हैं। तो उसी को बेसिकली ये पैकेट ट्रेसर में उसको डिफाइन किया गया पीडीयू से, मतलब प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। ओके, अब वो प्रोटोकॉल डाटा Okay, यूनिट sir. जो है वो तुम्हारा पीडीयू एक सिमुलेशन फॉर्म में आपको दिखा रहा है कि आपका कहाँ से पैकेट गया, कहाँ डेस्टिनेशन है, सोर्स है, सक्सेस दिखाया है। इसका मतलब है तुम सक्सेसफुली तुम्हारा पैकेट रीच किया। सक्सेस जब तक शो नहीं कर रहा है तब तक इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट हो रहा है। ओके, ठीक है सर। सर Okay, फिर guys. असाइनमेंट में ये वाला फाइल अपलोड कर दे रही हूँ। आफ्टर Yes. दैट आई करेक्ट। Yes, yes, yes. Okay, guys. So I hope you all have. सर Yeah. Tell me. क्वेश्चन आपने जो दिया था उसमें कैसे करना है? बैकबोन नेटवर्क कुछ है क्या? बैकबोन बोल रहा है इंटरनेट पे सर्च करने से। क्या बैकबोन? बैकबोन केबल? ये सर मतलब कि बैकबोन एरिया कुछ बोल रहा है कि जीरो एरिया वाला बैकबोन एरिया होगा, उसके बाद और दो कनेक्ट होगा उसके साथ। हाँ, वो करो, ट्राई करो। ये सर अच्छा, वो वाला बैकबोन एरिया कौन सा बना है, मतलब भुवनेश्वर कौन सा वाला? किसी को भी बना सकते। एरिया 0 कर दो बैकबोन, ओके एरिया 1 2 ऐसे ले सकते हो। ओके Sir, टेल मी। Sir, is it necessary to connect one router to one switch? Like you said, ki we can use two routers, right? One for one city. So can I connect the two routers to one switch, or I have to assign another two switches for two routers? Two switches you just assign for two switches, na? Separate switches Okay, for sir. separate router. You can go ahead with that. एक Okay, स्विच sir. में 2 राउटर लगा दोगे तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। ओके, सो विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। या टेल मी। Sir, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? होमवर्क क्वेश्चन यही है तुम्हारा, ये तो क्लास वर्क दिया था, अभी जो दे रहे हैं वो तुम लोग करो, उसको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कर लोगे ठीक है, नहीं करोगे फिर इसको ट्राई करना, क्योंकि वैसा कॉन्फ़िगरेशन मैंने डिटेल में बताया नहीं है तुम लोग को। बस तुम लोग को दिया हो कि एक्सप्लोर करो ज़्यादा से ज़्यादा उसको, और उसके बारे में सर्च करो कि कैसे हम ऐसे कर सकते हैं। जस्ट काइंड ऑफ एवेन्यू फॉर द एक्सप्लोरिंग द थिंग्स मोर एंड मोर इन डिटेल। बट नहीं, योर वो होमवर्क क्वेश्चन इज क्या था? routing configuration. The homework is for only OSPF routing configuration. Today's class, what I have shown you in the classroom, that one you have to, after completing from your end, you have to upload. And apart from the classwork question was, like suppose you have a 3 location, Bangalore, Hyderabad, Bhubaneswar, and you are connecting, through 2 routers in each locations, and each router have 1 switch, and 1 switch has 2 devices. So the condition was that you need to configure OSPF in all those locations, and the 2 router from the Bangalore, two devices, end user devices from the Bangalore location. Those people, I mean, those who are working from those 2 locations, from that particular location, from the 2 devices, those devices should not communicate with the any other locations devices. That was the scenario. Did you understand? Yes, got it. sir, so the switch of Bangalore and like Bhubaneswar should be connected with each other, right? Yes. No. Bangalore, Bhubaneswar, why you connected to each other? You connect with a router, na? Router to router connection will establish. Yes, router. Yeah. Yes, so the router should be connected with each other. Yeah, routers should be connected with each other through the protocol called OSPF. Okay, sir. Okay, guys. Sir. So we'll see. Yeah. Not Sir. tomorrow. Tomorrow you don't have class. Tomorrow, day after tomorrow, you don't have class. You have to give the quiz. तो जितने भी चेक पॉइंट एग्जाम है अभी तक देखो, मैं तुम लोग को एक्टिवेट करने वाला था, नहीं कर पाया हूँ, बट व्हेन आई रीच टू द ऑफिस आई विल ट्राई टू एक्टिवेट इट all exams, and I'll So will you activate the checkpoint 3 as well? Because previously you said 1 and 2. That's it. No, one Okay. you all have already given. 1 is for revision only. 2 and 3 I'll activate. Okay. Yeah. Okay, we'll see you in next class on Monday.